आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ मेजरिंग वैलिडिटी। वैलिडिटी की पैमाइश क्यों करते हैं, इसका क्या मकसद है। मोस्ट बट नॉट ऑल, ज़्यादातर लेकिन ना ही सारे टेस्ट आर डिज़ाइन टू मेजर स्किल्स। टेस्ट बनाए जाते हैं स्किल्स, महारतों की पैमाइश के लिए। एबिलिटीज़ आर ट्रेड्स दैट आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, जो कि डायरेक्टली बिलवास्ता जो हैं वो मुहैया नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल, स्कोर्स ऑन द स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट मेजर डेवलप क्रिटिकल रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। ये हमारे पास एक टेस्ट है सेट, जो कि बनाया जाता है क्रिटिकल रीडिंग को मेजर करने के लिए, राइटिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी को। द स्कोर ऑन द सेट दैट एन एग्जामिनी ऑब्टेन, वो स्कोर, वो नंबर जो कि सेट में एक इम्तिहान देने वाला हासिल करता है। व्हेन ही टेक्स द टेस्ट, जब वो टेस्ट नहीं देता, इज़ नॉट ए डायरेक्ट मेजर ऑफ क्रिटिकल रीडिंग एबिलिटी। तो हम डायरेक्ट बिलवास्ता जो है वो क्रिटिकल रीडिंग एबिलिटी जज नहीं कर सकते। सच एज डिग्रीज सेंटीग्रेड, जैसा कि डिग्रीज या फिर सेंटीग्रेड्स है, इज ए डायरेक्ट मेजर ऑफ द हीट ऑफ एन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेंटीग्रेड या फिर डिग्री जो हैं वो हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हरारत को मेजर कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एग्जामिनीज developed critical reading ability must be inferred from the examinee's set critical reading score. The process of using a test score as a sample of behavior in order to draw conclusions about a larger domain of behaviors is characteristic of most educational and psychological tests. Responsible test developers and publishers must be able to demonstrate that it is possible to use of the sample of behaviors measured by a test to make valid inferences about an examinee's ability to perform tasks that represent the larger domain of interest. Validity versus reliability. ए टेस्ट कैन बी रिलायबल, एक टेस्ट जो है वो रिलायबल हो सकता है, बट नॉट बी वायलेट, लेकिन वो वायलेट नहीं होता। इफ टेस्ट स्कोर्स आर टू बी यूज टू मेक एक्यूरेट इन्फरेंसेस अबाउट एंड एग्जामिनीज एबिलिटी, दे मस्ट बी बोथ रिलायबल एंड वायलेट। टेस्ट जो है वो रिलायबल भी होना चाहिए और वायलेट भी होना चाहिए, काबिल भरोसा भी होना चाहिए और सही भी होना चाहिए। रिलायबिलिटी इज ए प्री रिक्विजिट फॉर वैलिडिटी। रिलायबिलिटी जो है वो रिलायबिलिटी से वैलिडिटी से पहले रिलायबिलिटी का होना ज़रूरी है। एंड रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू मेजर ए पर्टिकुलर ट्रेल और स्किल कंसिस्टेंटली। इन सिंपल वर्ड्स, अदर अल्फाज में वी कैन से दैट सेम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड टू सेम स्टूडेंट में यील्ड सेम स्कोर। एक ही टेस्ट जो कि एक ही इंतज़ामिया एक ही स्टूडेंट से लेती है, उनके स्कोर जो है, नंबर हासिल करता नंबर एक ही होने चाहिए। हाउएवर टेस्ट कैन बी हाईली रिलायबल एंड स्टिल नॉट बी वायलेट फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। टेस्ट जो है वो अगर हम इस तरह लेते हैं, एक ही टेस्ट एक ही तरीके से एक जैसे स्टूडेंट से, और स्कोर भी सेम आते हैं, लेकिन फिर भी वो टेस्ट जो है वो रिलायबल तो है लेकिन वायलेट नहीं है फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, किसी भी खास मकसद के लिए। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर की हम मिसाल ले लें। इफ देयर इज ए सिस्टमैटिक एरर, अगर उसमें एक सिस्टमैटिक एरर आ रहा है, एंड इट मेजर्स 5 डिग्रीज हायर, और ये 5 डिग्री ज़्यादा है, गलती की वजह से 5 डिग्री ज़्यादा बता रहा है। When the repeated reading have been taken under the same condition, जब हम बार बार रीडिंग लेते हैं under the same condition, एक ही conditions में, the थर्मामीटर से which yield consistent, उससे रिजल्ट तो consistent हमारे पास आ रहा है, but inference about the temperature is faulty,
लेकिन जो इन्फेरेंस है टेम्परेचर के हवाले से वो गलत है। दिस एनालॉजी मेक्स इट क्लियर, ये इस चीज़ को क्लियर करता है डैट डिटरमिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट फर्स्ट। रिलायबिलिटी जो टेस्ट की है वो पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है, पहला अहम कदम है, बट नॉट द डिफाइनिंग स्टेप, लेकिन डिफाइनिंग स्टेप नहीं है इन डिटरमिंग द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट। वैलिडिटी ऑफ टेस्ट के हवाले से हमारे पास थर्मामीटर है, वो उसमें सिस्टमेटिकल एरर है, वो रीडिंग 5 डिग्री ज़्यादा दे रहा है, वो कंसिस्टेंट तो है हमारे पास रिज़ल्ट, यानी कि 5 डिग्री का फ़र्क तो आ रहा है, कंसिस्टेंट रिज़ल्ट दे रहा है, लेकिन ठीक नहीं है, वैलिड नहीं है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ अश्योरिंग द वैलिडिटी ऑफ द असेसमेंट टूल्स। असेसमेंट टूल्स की वैलिडिटी के हवाले से मुख्तलिफ तरीके हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड्स, जिनमें इम्पोर्टेंट मेथड जो हैं नेमली कंटेंट, कंस्ट्रक्ट, प्रिडिक्टिव, क्राइटेरियन, वैलिडिटी। मेथड्स ऑफ मेजरिंग वैलिडिटी, वैलिडिटी को मैयर करने के लिए, वैलिडिटी के ऊपर मैच के लिए कौन से तरीके हैं। वैलिडिटी इज द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ए पर्टिकुलर यूजेज ऑफ द टेस्ट स्कोर्स। Test validation is then the process of collecting evidence to justify the intended use of the scores. In order to collect the evidence of validity, there are many types of validity methods that provide usefulness of the assessment tools. Some of them are listed below. Content validity. The evidence of the content validity is judgmental process and may be formal or informal. जो एविडेंस हमारे पास है कंटेंट की वैलिडिटी का, वो एक हमारे पास जजमेंटल तरीकाकार है, एंड मे बी फॉर्मल, वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल प्रोसेस है सिस्टमेटिक प्रोसीजर। जो फॉर्मल प्रोसेस है वो एक सिस्टमेटिक तरीकाकार है, विच अराइव्स एट द जजमेंट, जो कि फैसले के वक्त आता है। The important components are the identification of the behavioral objectives and construction of table of specification. जो इसके अहम हिस्से हैं वो क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, मुआशरती मकासद जो होते हैं उनकी निशानदही करना, और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का बनाना। कंटेंट वैलिडिटी evidence involves the degrees to which the content of the test matches a content domains associated with the construct. For example, a test of the ability to add two numbers. हमारे पास एक टेस्ट है जिसमें हमने कौन सी एबिलिटी को चेक करना है, दो नंबर्स को जमा करने का। शुड इंक्लूड ए रेंज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, जिसमें जो है एक रेंज होनी चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स के कॉम्बिनेशंस के हवाले से। ए टेस्ट विद ओनली 1 डिजिट नंबर, ए टेस्ट जो है वो उसमें एक ही डिजिट वाला नंबर होता है, और ओनली इवन नंबर, या फिर इसमें सिर्फ इवन नंबर आ सकते हैं, वुड नॉट हैव गुड कवरेज, वो अच्छी कवरेज नहीं करेगा ऑफ द कंटेंट की। कंटेंट रिलेटेड एविडेंस टिपिकली इन्वॉल्व सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं वैल्यूएटिंग द टेस्ट आइटम अगेंस्ट द टेस्ट स्पेसिफिकेशंस। इट इज़ ए non-statistical type of validity that involves the systematic examination of the test content to determine whether it covers a representative sample of the behavior domain to be measured. Anastasi and Orbina 1997 for example does an IQ questionnaire, एक IQ questionnaire बनाता है, have atoms covering all areas of intelligence, जिसमें इंटेलिजेंस के तमाम एरियाज जो हैं उसने कवर करने हैं, डिस्कस्ड इन द साइंटिफिक लेक्चर, जो कि साइंटिफिक लेक्चर के अंदर डिस्कस किए गए हैं। A test has content validity built into it by carefully selection of which atoms to include, कि कौन सी एटम्स जो है वो इंक्लूड करनी है इस टेस्ट में और कौन सी नहीं है। एटम्स आर चूजन so that they comply with the test specification which is drawn up through a
through examination of the subject domain. Foxcroft 2004 note that by using a panel of experts to review the test specifications and the selection of items, the content validity of a test can be improved. The experts will be able to review the items and comment on whether the items cover a representative sample of the behavior domain. For example, in developing a teaching consistency test, experts on the field of teaching training would be identify the information and issues required to be an effective teacher, and then will choose rate items that represent those areas of information and skills which are expected from a teacher to exhibit in classroom. Lushy in 1975 proposed that each rater should respond to the following question for each item in content validity. कंटेंट वैलिडिटी के हवाले से हर रेटर को इन सवालात का ख्याल रखना चाहिए. इस स्किल और नॉलेज मैयर्ड बाय दिस आइटम की जो स्किल है या नॉलेज है वो इस मैयर से इस टेस्ट से चेक हो सकता है. एसेंशियल, ये ज़रूरी है कि नहीं है, इसमें क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं. यूज़फुल बट नॉट एसेंशियल, मुफीद तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है. नॉट नेसेसरी, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. With respect to the educational achievement test, a test is considered content valid when the proportion of the material covered in the test approximates the proportion of the material covered in the course. There are different types of content validity. The major types, face validity and curricular validity, are as below. Face validity. Face validity is an estimate of whether a test appears to measure a certain criterion. Face validity जो है ये एक एस्टिमेट है कि एक जो टेस्ट अपेयर हुआ है उससे एक ख़ास क्राइटेरियन measure हो सकता है कि नहीं. It does not guarantee that the test actually measure phenomena in that domain. Face validity is very closely related to content validity. Face validity का ताल्लुक content validity के साथ बहुत करीब है. While content validity depends on a theoretical basis for assuming if a test is assessing all domain of certain criterion. Does assessing addition skills domain of a certain criterion? Does assessing addition skills yield in a good measure for mathematical skills? To answer this, you have to know what different kinds of arithmetic skills, mathematical skills include. Face validity relate to whether a test appears to be a good measure or not. This judgment is made on the face of the test, thus it can also be judged by the amateur. Face validity is a starting point but should never be assumed to be probably valid for any given reason, as the expert may be wrong. For example, suppose you were taking an instrument reported measuring your attractiveness, but the questions were asking you to identify the correctly spelled word in each list. Not much of link between the claim of what it is supposed to do and what it actually does. Possible advantage of face validity. If the respondent knows what information we are looking for, they can use that context to help interpret the questions and provide more useful, accurate answer. Possible disadvantage of face validity. If the respondent knows what information we are looking for, they might try to bend and shape their answers to